हेलो, माय नेम इज पंकज अग्रवाल। आज हम ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें टॉलमीज थ्योरम रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसमें ए बी डायमीटर है और वी आर गिवन सम लेंथ्स लाइक ए सी 28, बी डी 60, सी डी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? वी आर नॉट गिवन बी सी, we are not given AD, we are just needed to find CD। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉलमीज थ्योरम देख रहे हैं। अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इंस्क्राइब कर सकते हैं सर्कल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए टॉलमीज थ्योरम बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर जैसे ये साइड्स है ABCD, तो ऑपोजिट जो साइड्स है उनका प्रोडक्ट का सम, यानी कि A इंटू सी प्लस B इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, दैट मीन्स AC इंटू BD। दिस इज टॉलमीज थ्योरम बट एप्लीकेबल ओनली फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So now we know this result. So अब ये रिजल्ट यहां पे कैसे यूज करेंगे? 28 इंटू 60 इज प्लस 100 इंटू सी डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। दैट मीन्स यहां पे मुझे बी सी या ए डी अगर किसी तरह से निकल जाए, वी आर डन। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ओके, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो एंगल ACB इज 90 डिग्री एंड अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। व्हाई आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस एंगल? बिकॉज हम लोग को पता है कि 28 इंटू 60 प्लस CD इंटू 100 is equal to product of the diagonals, that means BC into AD। अगर मैं CD निकालना चाहता हूं तो क्या मैं BC और AD निकाल सकता हूं? Have a look. Now this angle is 90, so obviously BC square is equal to 100 square minus 28 square. Obviously you can take 4 square common, so 25 square minus 7 square. Obviously you know that 7 square plus 24 square is 25 square. So you can write BC square is equal to 4 square into 24 square. In case if you do not know the Pythagorean triplet 7, 24, 25, you can easily calculate 25 minus 7 is 18, 25 plus 7 is 32. So 18 into 32 is 9 into 64, that means 3 into 4 square, 3 into 8 square, that is 24 square. So BC will be 96. Now I know the value of BC. I need to find AD, which can be easily done because AD square, just have a look at this triangle ABD. 100 square minus 60 square, you can take 20 square common, so 5 square minus 3 square, and obviously you know 3 square plus 4 square is equal to 5 square, so you can write 20 square into 4 square. So AD comes to be 20 into 4, that is 80. So I know AD is 80. Now you just need to plug in the values. So what do you get? 60 into 28, 28, 84, 168, 1680 plus 100 CD is equal to 96 into 80. 100 CD is equal to 96 into 80 minus 1680 can be written as 80 into 21. If you take common, then you can write 80 into 3 common, then you are getting 32 minus 7, 25. 25, 400, 200, 2000,
6,000. So obviously you get CD equal to 60. We are done. That's all. Thank you.